हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आर यू फाइन? आप सब ठीक हो? गुड। सो लेट्स स्टडी today's lecture for class UKG, subject English, and this is our chapter number 2. Today's topic is sound of A, and this is our lecture number 9. So before starting our new lecture, let's revise our previous lecture first, which I have given you homework. हम पहले अपने previous lecture का एक बार revision कर लेते हैं जो मैंने आपको homework दिया था. Okay? So take out your English notebook and open your homework. So we will read first. Okay? So you have to keep your fingers on the word. Okay? B-A-L-L, ball. B-A-L-L, ball. Ball means गेंद. Okay? W-A-L-L, wall. W-A-L-L, wall. Wall means दीवार. Now next word, F-A-L-L, fall. F-A-L-L, fall. Fall means गिरना. Fall means गिरना. Now come to next word, C-A-L-L, call. C-A-L-L, call. Call means किसी को फोन करना या किसी को बुलाना. ओके? T-A-L-L, tall. T-A-L-L, tall. Tall means लंबा. Tall means लंबा. So I have given you this homework. I hope you have done it. So now we will revise same words with the help of pictures. हम ये सारे words दोबारा से revise करेंगे. किसकी help से? Pictures की help से. Okay? Now see these pictures. I have already shown you these pictures in your previous lecture, right? मैंने आपको ये सारी pictures आपके previous lecture में show की थी. Okay? Now we will read it again. Read with me. हम दोबारा पढ़ेंगे. आपको मेरे साथ पढ़ना है. ओके? B-A-L-L, ball. This is the picture of ball. Ball means गेंद. T-A-L-L, tall. Tall means लंबा. Tall means लंबा. C-A-L-L, call. Call means किसी को फोन करना या किसी को बुलाना. See this picture. In this picture, a boy is calling somebody. किसी को फोन कर रहा है. F-A-L-L, fall. Fall means गिरना. Fall means गिरना. W-A-L-L, wall. Wall means दीवार. Wall means दीवार. So now we will start our today's lecture. अब हम अपना आज का lecture start करेंगे. Okay? So open your English notebook and you have to write with me. Okay? But student, first I want to show you some pictures. Okay? Before writing, हम लिखने से पहले आपको मैं कुछ pictures show करूंगी. So that it will help you to recognize the pictures and words. आपको ये pictures recognize में और words को याद रखने में help होगी. Okay? तो I want to show you some pictures. Let's see the pictures first. पहले हम अपनी pictures देख लेते हैं. Then we will write. उसके बाद हम अपनी English notebook में लिखेंगे. Okay? Now, see the first picture. S-A-T, sat. S-A-T, sat. Sat means बैठना. Sat means
बैठना. Now next picture. F-A-T, fat. F-A-T, fat. Fat means मोटा. Fat means मोटा. Now next picture. R-A-N, ran. R-A-N, ran. Ran means दौड़ना. Ran means दौड़ना. G-A-P, gap. G-A-P, gap. Gap means डिस्टेंस मेंटेन करना. जैसे आपको मैम बोलती है ना असेंबली में और लाइन में, वेन एवर यू मेक लाइन, मैम आस्क यू टू मेंटेन योर डिस्टेंस. जब भी आप लाइन बनाते हो मैम आपको बोलती है ना बेटा यू हैव टू मेंटेन गैप बिटवीन यू. आपको बोलती है ना आपको गैप देके खड़े होना है, टच करके नहीं खड़े होना है. दैट मीन्स गैप. उसको हम क्या बोलेंगे? गैप. Now next, D-A-Y, day. D-A-Y, day. Day means then. Day means then. Okay, now we will write these words in our English notebook. Okay, now you have to write with me. Okay, अब आपको मेरे साथ लिखना है. So let's start. First we have to make format. पहले हमें अपना format बनाना है. In first line you have to write down date. आपको first line में date लिखनी है. So write with me. Capital D. Start from the corner. Okay. आपको corner से start करना है. Then small a. Then small t. Then small e. D-A-T-E, date. Date means दिनांक. Then put dash on second line. आपको dash लगाना है. Here you have to write down date. यहाँ पे आपको अपनी date लिखनी है. Now write down C.W. C means class. W means work. Class, work. Kaksha, karye. Now in second line, write down day. Again write down capital D. Then small a. Then small y. D-A-Y. Day. Day means then. Now put dash on second line. Here you have to write down day. Okay, आपको यहाँ पे दिन लिखना है. Whenever you do this work, you have to write down date and day according to that day. जब भी आप इस काम को करोगे आपको उसी दिन की डेट और डे लिखना है. Okay, now we will do sound of A words. Write down capital S O U N D. Sound. Now leave some space. थोड़ी सी जगह छोड़नी है. Then small o. Then small f. Off. Again you have to leave some space. थोड़ी सी जगह फिर से छोड़नी है. Then small a. Today we will do sound of A words, but we will not use same words in the end as we do in our previous lecture. आज हम साउंड ऑफ ए के वर्ड्स करेंगे पर हम एंड में सेम लेटर्स यूज नहीं करेंगे जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में करते थे. ओके, जैसे हमने एटी का यूज किया तो सारे वर्ड्स में एटी का यूज किया, एन का यूज किया तो सारे वर्ड्स में एन यूज किया. बट टुडे वी विल नॉट रिपीट सेम थिंग. आज हम सेम थिंग नहीं रिपीट करेंगे. ओके, आज हम मिक्स वर्ड्स लेंगे. So write with me. First picture I have shown you.
सेकेंड वर्ड क्या था? नाउ फर्स्ट राइट डाउन S A T sat. S A T sat. Again we will write same word this side. Write down S A T sat. Sat means बैठना. Okay. Now write next word. F you have to write down in 4 lines. F आपको 4 lines पे लिखना है. F A T fat. Again we will write F A T fat. Fat means मोटा. Fat means मोटा. Now next word G A P. P also you have to write in 4 lines. G A P gap. Again G A P gap. Gap means distance maintain करना. ठीक है, gap छोड़ना. Next word R A N. Ran. Ran means दौड़ना. Ran means दौड़ना. Again R A N. Ran. Ran means दौड़ना. Now next word D A Y. Day. Again D A Y. Day. Day means दिन. Day means दिन. Now we will write our homework. Write down capital H dot capital W. H means home, W means work. Home, work. Grah, कार्य. Now put dash on second line. Write down learn. Learn means आपको याद करना है. Capital L, small e, small a, small r, small n. Learn. Now slash. Write down rewrite. Rewrite means दोबारा लिखना है. Capital R E W R I T E. Rewrite. Now again leave some space. थोड़ी सी जगह छोड़नी है. Then write down D T H E. D. Now again you have to leave some space. थोड़ी सी space छोड़नी है. Write down capital C dot W. Now in next line you have to write down twice. T W I C E. Twice. Now this work is for 2 days. ये काम आपका 2 दिन का है. In the morning you have to write classwork and in the evening you have to write your homework. Okay, and do your homework in good handwriting. आपको अपना होमवर्क बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करना है. Okay, now again we will read it. एक बार हम फिर से पढ़ेंगे. Okay, now you have to read with me. मेरे साथ पढ़ना है. S A T sat. S
F-A-T, sat. Sat means बैठना. F-A-T, fat. F-A-T, fat. Fat means मोटा. G-A-P, gap. G-A-P, gap. Gap means जगह छोड़ना, डिस्टेंस छोड़ना. R-A-N, ran. R-A-N, ran. Ran means दौड़ना. D-A-Y, day. D-A-Y, day. Day means दिन. Listen students, you have to do your work in good handwriting, okay? And you don't have to write this line in your homework, okay? आपको homework में आपको ये homework वाली line नहीं लिखनी है और आपको 2 days ऐसे ही repeat करना है, okay? If you like this video, then press like button and subscribe this channel. Thank you.